Welcome to PRATHAM Test Prep. My name is Ashish Bhargav and welcome to another episode of Daily News Analysis. And I hope you guys are doing well. आप सारे अच्छे होंगे. And good morning to everyone, and I welcome each and everyone here for the Daily News Analysis. Majorly in newspaper analysis, we discuss about the Hindu and Indian Express and in all the important news that we cover in this session. So make sure if you are new in this channel, please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon. So आज की जो न्यूज़ है आपके पास बहुत अच्छी न्यूज़ है, और उससे पहले I just want to tell you that what exactly we discuss in the newspaper analysis. We majorly discuss about all the important events like national news, like international news, economy based news, sports based news, science and tech, person in news, summits and conference, and miscellaneous. And we also discuss about Supreme Court verdict, any amendments, any bills, which is very important for your exam perspective. So this session is very important because majorly we discuss about all the important events, and this will help you out to solving the current question that would be based on current affairs. And here is the quote of the day: nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. And here, as I told you in each and every session, that newspaper is very important, but not each and every paragraph, each and every article is important for your exam perspective. So make sure whatever the things is here, that you should keep an eye on that. That will be very essential for you. And we have taken initiative questions of the day, and that is important. At the end of the session, we'll ask you 4 to 5 questions that would be very important, and you should know about what kind of question that can be framed from the newspaper. And here the headlines of the day. Just a second. And why headlines of the day? Because it gives you a glimpse that कि आपको इसमें क्या चीज़ें कवर करने की ज़रूरत है. So headlines, which means that मेजरली आपको इसमें जो समराइज टॉपिक्स है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं. सो द फर्स्ट इज हियर वी कैन सी वर्ल्ड हाईएस्ट फाइटर एयरफील्ड टू कम अप इन लद्दाख, न्यूमा. In this article, we should know about the BRO, which is Border Road Organization, is set to achieve a remarkable feat as it embarks on the construction of world highest fighter airfield at Neoma in Ladakh, and the foundation stone of this ambitious project is scheduled today, that is on 12 September, and that is placed by Defense Minister Rajnath Singh on September 12. That means it's meant today. That was in the Devak Breach in Jammu. So Neoma stands a prominent village situated in the southern region of Ladakh, India. It hosts an Indian Air Force based within the Leh district. And Neoma is notably home to an advanced landing ground that was established in the year of 1962. Moving to the next one, the next headlines is Indian Prime Minister Modi handed over the G20 presidency, give to Brazil president. Give to Brazil president, making the transition of leadership within the elite group, and the transfer of power took place with a warm diplomatic exchange. So the next year जो है आपका 2021 में the presidency the hold was Indonesia, and 2024 the G20 summits would be in the Brazil. And the main purpose to this, the social inclusion and the fight against hunger. That was the highlighting the importance of addressing social inequalities and hunger on global scale. Now here is a very bad news about the Morocco. That Morocco earthquake still rise about 2100. So on Sunday, Morocco mourned a victim of a devastating earthquakes that killed more than 2100 people, as a rescue team reacted to find survivors trapped under the rubble of flattened village. So what kind of things that you should keep an eye on that? Like once we are discussing about, you like if there are any places in the news, you should know about where the country is located, because we have already discussed the mechanism of the earthquakes, how it is happening. So this is the very strongest earthquakes, and as we know that Morocco, that is located in the North African country, right?
So sometimes they will ask you in your exam, like Morocco is a place in the news and is a witnessed for the earthquakes, is located in which part in the world and which part of Africa. So the answer would be here, North Africa would be your answer. So if you should know about the key facts about Morocco, so it is a mountain country in western northern Africa that lies directly across the Strait of Gibraltar, and it retains much of ancient architecture and even more of its traditional customs. Morocco की largest city है, that is Atlantic Ocean port of Casablanca, and it is an industrial and commercial center. And where is the capital of Morocco? That is called Rabat. It borders Algeria to the east and southeast and western share. अगर आप मैप पे देखें इस पार्ट पे आपको यहाँ पे that would be the western Sahara to the south of जहाँ पे Atlantic Ocean के आपको west में दिखेगी ये. That is the western part of Atlantic Ocean and the northern part of Mediterranean Sea. So it if you talk about two small Spanish enclave, that is we can say Ceuta and Melilla, जो वहाँ पे that is situated in the country northern coast. Major mountain range are Atlas and Rif. जो spoken languages हैं वो है Arabic and Amazigh. Religion वहाँ पे predominantly Islam है, rich Islamic heritage है. And if you talk about political system, so the political system that Morocco has a constitutional monarchy with two legislative houses. And वहाँ की जो economy है, that Moroccan economy that remains heavily dependent on the export of raw material. Next is talking about like arguing well for the data privacy. And you should know about that. The nitty-gritty of the subject is that recently the government has passed the Digital Personal Data Protection Bill 2023. So you should know about the background. The first thing that you should keep an eye is that your background, and second is that what was the important takeaways. What are the important takeaways that you should know about? This is very, very important. So what had happened? In the year 2017, during a sultry summer, the Supreme Court of India that created a watershed of custodian of individual rights and liberties. Basically इसमें क्या है आपका जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है इसमें एक वर्ड यूज किया एज ऑफ कंसेंट, राइट? And there is an apprehension that people are awaiting, and it is talking about it you know overturn almost 4 decades of jurisprudence and recognize an individual right to privacy. So you should know about the right to privacy is in which article of the Indian Constitution. So my friend, it should be like Article 21. So Article 21 of the Constitution, which talks about the right to privacy, right? So in an era because as you should know about the things that it is talking about 2017 that was in the Supreme Court said that the right and liberty that should be guaranteed by our Constitution. It should not be violated at any circumstances. So in an era where digital economies are fueling national and international ambitions that would be more efficient and lucrative exploitative personal data. So ये जो हमारा डेटा पर्सनल डिजिटल डेटा पर्सनल बिल है, दिस इज कॉल्ड DP. इस बिल में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग थी पुत्तुस्वामी की, उसने एक चीज़ कही थी कि जो हमारा इंडिया है दैट हैज़ विटनेस्ड concerted efforts at the national and even some of state level, and that should be effectuate some forms of consent based data governance framework. Basically what the apprehension and what the challenges is that if you are data mining of some particular person of any individual, the consent should be important. Like what purpose you are collecting the data. This is what the main crux in the Digital Personal Data Protection Bill. So if you talk about India's data protection law, which did not so in 2018, and बाद में क्या हुआ December 2019 में, so that was a bill was tabled in the parliament. This is called Personal Data Protection Bill that was in the year of 2019. So and उसके बाद क्या हुआ, Joint Parliamentary Committee ने इसको आगे पार्लियामेंट में इस पर डिस्कस की. सो जो DP है हमारा DP मतलब शॉर्ट फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ आपको, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल. सो ये दैट इज़ कॉल्ड वी कैन से एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डेलीगेशन.
राइट बिकॉज यहाँ पे जो रीज़न ये मेंशन है तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है दैट excessive amount of delegation regarding the establishment and function of the DPD in earlier draft that has been rectified. So the provision around the DPD now closely mirror similar provisions for regulations and is quasi-judicial. So quasi-judicial body, which means that as we know that that we have India have quasi-judicial, quasi-federalism. Quasi-federalism, that it means that most of the power is tilting towards the center. So state does not have sovereign rights to establish or any laws. If the government of India, the central government, if they believe that the law should not be the betterment of the state, they can dismiss that law. So India's intent of harnessing its startup sector in lieu a heavy-handed clampdown through stringent legislation. In this, you should know about the DPDP 2023 that clearly shows an evolution in legislative reasoning, distancing itself from the ideas of data localization. The term data localization that we have discussed earlier, right? Data localization, and it established more liberal and free-flowing the data access. And the one more important thing that you should know about, this is the age of consent. That should be very important. While as you should know about the DPDP bill, Digital Personal Data Protection Bill, that is expected to bring some scrutiny and decrying for its sweeping government exemptions. So in short, इसमें the main crux is that age of consent should be important. The person privacy should not be violated as per the Article 21 of the Constitution. एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस चीज़ की राइट्स देता है कि हमारी जो अपनी एक प्रिवेसी है द प्रिवेसी बिकॉज सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट 2017 में उन्होंने एक दो टर्म यूज़ किए थे द राइट्स एंड लिबर्टी दैट इज गारंटीड बाय आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट शुड नॉट बी वायलेटेड एट एनी सर्कमस्टांसेस. आई होप दिस वन इज क्लियर फॉर ईच एंड एवरीवन. नाउ वी मूविंग फर्दर वी टॉक अबाउट हियर इज टेंशंस ओवर खालिस्तानी वायलेंस फॉरेन इंटरफेरेंस. इसमें क्या चीज़ें बात की गई है बेसिकली जो इंडिया का कंसर्न है that anti-India Khalistani violence that is in Canada. So यहाँ पे जो कैनेडियन कंसर्न था वहाँ पे जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? दैट द नेम इज जस्टिन ट्रूडे. सो ये इनके यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं. दोनों के बीच में बात हुई. फिर बाद में आपके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं जिस पे उन्होंने बात की. सो एज वी नो दैट आवर कंट्री इज़ होस्टिंग G20 समिट्स. तो अभी बहुत सारे इसमें बिकॉज अभी आपको पता होना चाहिए जो हमारे बायलैटरल मीटिंग थी G7 समिट्स जो हुई थी द ईयर May 2022 द लास्ट ईयर है May 2022 में दैट हैव फेल टू रिस्टोर टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड कनाडा. और इंडिया एंड कनाडा के साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हैं राइट. एंड यू शुड नो अबाउट जो हमारा जो इसमें फैक्ट्स अबाउट द कनाडा राइट बिकॉज वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो की फैक्ट्स में देखो द कनाडा इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन एरिया आफ्टर रशिया. फर्स्ट पे आपका रशिया है, सेकेंड वन इज कनाडा, थर्ड वन इज USA, फिर चाइना, फिर आपका ब्राज़ील, फिर इंडिया. सो इंडिया द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. Brazil, फिर उसके बाद Australia and then India. So India is the 7th largest country in the world. If we go to the chronologically order, the first should be Russia, उसके बाद Canada, फिर US, then China, फिर Brazil, फिर आपका Australia and then India. So India is the 7th largest country in the world in terms of area. Make sure, not in terms of population. So Canada is the second largest country, occupying roughly the northern 2/5 of the continent of North America. And Canada में constitutional monarchy है and a parliamentary democracy. Constitutional monarchy, which means that British monarch is the head of the state, but her role is mainly symbolic and ceremonial. जो हमारा actual governing of the country that is carried out by elected representative and government official. And the border between United States and Canada is primarily defined by the 49th parallel north. The US और कनाडा का जो बॉर्डर है that is connected by the 49th parallel north, and Canada has a number of lakes including Great Bear Lake, Great Slave Lake,
Winnipeg Lake, 5 Great Lake of USA border, namely Superior, Michigan, Huron, Erie and Ontario. So this is the key facts about this. Now the next article talking about what should be done with the electronic waste, which means talking about e-waste. So there are few questions that you should think about it. देखो पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि to read anything that is not important. What things that you understood that is important. Because एक आपको अपने अंदर एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो डेवलप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज आर्टिकल्स जो होंगे आपके उसको पहले आप कितना इंटरलिंक कर पाते हो, ठीक है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट उसके बैकग्राउंड के बारे में कितना समझते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इस आर्टिकल में अगर आप देखें तो यहाँ पे मेंशन किया है कि व्हाट शुड बी डन विद द ई वेस्ट. सो डज इंडिया नीड अ पॉलिसी पुश टू एनकरेज मैन्युफैक्चरर टू रीयूज ओल्ड कंपोनेंट्स? That was the first questions that you should think about it. What is the government's stand on the salvaging precious metals or to reusing old phones that can be repaired easily? And the third thing that you should know about, why are consumers not handling in device which they do not use? So अभी आपको समझना होगा ICEA के बारे में. ये क्या है? The Indian Cellular and Electronic Association. The Indian Cellular and Electronic Association. इन्होंने अगस्त 28 को रिलीज किया रिपोर्ट ऑन पाथवेज टू सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, एंड इट वाज एन एफर्ट ऑफ ICEA प्लस नीति आयोग. नीति आयोग क्या है माय फ्रेंड? नीति आयोग इज दिस नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई आस्क्ड यू अर्लियर, डज India have e-waste management? Yes, because e-waste management is largely informal in India. As in the case of recycling, roughly 90% of the collections and 70% of the recycling are managed by a very competitive informal sector. And ICEA, which is Indian Cellular and Electronic Association का ये कहना है, जो हमारा informal sector है, informal sector is good at salvaging or older devices from parts and profiting from repairs with them. And union government union government ने notified किया e-waste management rule 2022. e-waste management rules 2022, and जो लास्ट नवंबर में था, that was ordered to digitize the process and provide more visibility to the movement of e-waste in the economy. So the informal sector that is relies on a number of tools and techniques to stay competitive. For instance, the report authors speak of cannibalization and repair shops buying whole device and breaking them down to serve spare parts for repair. Now the नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन ई-वेस्ट बी रिसाइकल. ICA की रिपोर्ट ये कहती है, ये सजेस्ट करती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विच इज़ कॉल्ड PPP, राइट, टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ स्प्रॉलिंग रिवर्स सप्लाई चेन and an expensive prospect that envisages collecting devices from users, wiping them the clean of personal data and passing them along for further processing and recycling. चैलेंजेस तो बहुत सारे चैलेंजेस होंगे इसमें. मेकिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी आउट ऑफ ई वेस्ट इज़ टेम्पटिंग, स्पेशली गिवन द अनप्रेडिक्टेबल सप्लाई चेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. एग्जैक्टली द फुल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इज़ द कैपिटल इंटेंसिव. उसमें बहुत पैसा भी खर्च होगा गवर्नमेंट को, एंड दैट विल रिक्वायर बेटर क्लस्टरिंग ऑफ मटीरियल एंड वाइबल बिजनेस मॉडल. नेक्स्ट, एप्पल कंट्री गेट्स ग्राउंड रेडी फॉर कैनबिस कल्टिवेशन. यहाँ पे क्या है कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने दैट टेकिंग स्टेप टू लीगलाइज कैनबिस, जिसको हम आम भाषा में गांजा कहते हैं, राइट. गांजा या भांग कह सकते हो आप उसे. एंड कैनबिस कल्टिवेशन इन द स्टेट, उसको लीगलाइज करने की बात चल रही है फॉर द मेडिकल पर्पस. यू शुड नो अबाउट कोई कंट्री का नाम बताओ जिसने कि रिसेंटली आपको कैनबिस को क्या क्या लीगलाइज किया, राइट. कनाडा में वैसे लीगलाइज है ये,
बाकी किसी कंट्री का नाम बताओ, और यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी NDPS एक्ट के बारे में, विच इज़ कॉल्ड नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। जो आपका NDPS एक्ट है, NDPS एक्ट 1985। सो द NDPS एक्ट ऑफ 1985 दैट हैज इम्पोज्ड, और कौन सा एक्ट आपके हमारे कंट्री में है जो कि ये बैन करता है कि इट शुड नॉट बी लीगलाइज टू यूज़ इट, दैट इज़ कॉल्ड NDPS, नार्कोटिक ड्रग। तो मैं आपको इसमें फुल फॉर्म मेंशन करता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 that completely impose a ban of extracting the resin and flowers from the plant, but a law determines the method and extent of its cultivation for medical and scientific purpose। उसमें ये भी चीज़ मेंशन है कि आप इसे मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, राइट, बट नॉट फॉर द कंज्यूमिंग, उसको वो कंज्यूम नहीं कर सकते। तो हमारे कंट्री में जो सेक्शन 10A है, उसमें क्लॉज 3 विच सेज दैट स्टेट टू मेक रूल्स रिगार्डिंग द कल्टिवेशन ऑफ एनी कैनबिस प्लांट, उसके प्रोडक्शन एंड उसके पोजीशन, ट्रांसपोर्ट, कंजम्पशन, यूज एंड परचेज एंड सेल्स एंड कंजम्पशंस ऑफ कैनबिस, एंड स्टेट आर empowered to permit by general or special order the cultivation of hemp, which means that cannabis। सो हिमाचल गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज करने की बात की है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेडिकल पर्पस, राइट। उसको किसी कंट्री में आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैरिजुआना की बात हुई है। अभी MP थे पाटियाला के, पंजाब के, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था प्राइवेट मेंबर्स बिल इन पार्लियामेंट टू अमेंड द NDPS एक्ट इन 2016 दैट सीकिंग दैट decriminalize opium, marijuana and poppy husk, that has welcomed the decision। तो इसमें मेडिकल पर्पस के लिए बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, मेडिकल पर्पस के लिए इसे यूज़ करते हैं। सो दैट मीन्स जो कैनबिस है दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द हिमाचल प्रदेश फॉर डेकेड्स, एंड उसमें जो हमारे कल्टिवेटर्स हैं उसमें उसकी बात हो रही है कि इसको हम मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। बिकॉज बहुत सारे जो इंसोमेनिया की डिजीज़ होती है, इससे क्या करती है, क्योर की जाती है। तो दैट्स वाई वहाँ पे हिमाचल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी वहाँ पे इम्प्लीमेंट होने की बात हो रही है। दिस इज ऑल अबाउट द क्रक्स ऑफ द आर्टिकल। नाउ वी मूविंग फर्दर, एंड हियर इज टॉकिंग अबाउट रीडेबल एफर्ट्स टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क। बिकॉज इस आर्टिकल में आपको सबसे पहली चीज़ ये समझनी होगी कि जो G20 समिट्स है एंड इंडिया, दैट इज़ एज अ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, एंड ये एक अपॉर्चुनिटी है टू एक्सलरेट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड बिल्ड रेजिलियंस टू रिस्क। तो G20 की जो समिट्स है हमारी, उससे इसका क्या कनेक्शन? सो इन शॉर्ट यू शुड नो अबाउट कि एज लीडर्स अंडरस्टूड एज G20 समिट्स इन न्यू दिल्ली दैट UN, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसमें आपका है SDG, विच इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि यूनाइटेड नेशंस का है। उसमें जो समिट्स थी उसमें ये चीज़ मेंशन हुई है कि लाइक रिस्क आर बीइंग क्रिएटेड फास्टर एंड दे आर बीइंग रिड्यूस्ड आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक के बाद। आपने देखा होगा दैट इज़ प्लॉली क्राइसिस ऑफ वॉर, बहुत सारे कंट्री में मिलिट्री कू लगी। तो बेसिकली क्या है कि जो आपका डिज़ास्टर्स है, नेचुरल कैलमिटीज़ हैं, उससे हमारी इकॉनमी भी कहीं ना कहीं ख़राब होती है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, that is already among the world most disaster prone countries, that is experiencing this new reality in 2022. The country has bettered by disaster or extreme weather nearly every day, and what have the solution at hand? So there is also good news that first we have to solution for both adaptation and mitigation, the two things that we should know about, that adaptation and mitigation. So in short, the 8 years into the implementation of the Sendal framework, और ये जो हमारा इसके लिए हमारे पास एक ट्रीटी हमने साइन की, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फ्रेमवर्क, एंड प्रोग्रेस इज सीवियरली बैकिंग। हाउएवर यू शुड नो अबाउट कि इन मे दिस ईयर जो UN के मेंबर्स थे, मेंबर स्टेट्स, उन्होंने कमिट किया था टू रेजिलियंस बिल्डिंग विथ रिनोवेट अर्जेंसी,
It means that the crisis is not only revealed our vulnerability to risk, but also forged new ways to working together, including through digital innovation. एंड सेकेंड चीज़ें क्या उसमें हो सकती है, दैट इंडिया का जो हमारा था डिजिटल वैक्सीन सिस्टम, दैट वाज कोविन. So all the 28 states have prepared their own disaster management plans in recent year, because सारे states की आपकी topography है that is completely different. If you cannot compare Delhi to Uttarakhand, you cannot compare Uttarakhand to Himachal. सबकी जो आपकी ट्रेन स्ट्रक्चर है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. सो व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स कि सारे स्टेट्स में जो है आपकी अपनी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स होनी चाहिए, राइट. सो रिसेंट जो हमारी जीरो डेथ टोल ऑफ साइक्लोन बिपरजॉय इन गुजरात आपने देखी होंगी न्यूज़ में. सो उसमें क्या था कि गवर्नमेंट was trying to tackle all these things, and the zero death toll of cyclone Biparjoy in Gujarat, that is demonstrate what can be achieved through effective preparedness, response and early warning and action system. So हमारी 15th तो फाइनेंस कमीशन है, और आपको पता होना चाहिए 15th फाइनेंस कमीशन है. देखो एक आर्टिकल्स के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती है, तो यू शुड नो अबाउट कि फाइनेंस कमीशन को हमने किया, प्रीवियस में हमने बिपारजॉय को हमने किया, ठीक है. उसके बाद फिर इसमें क्या सॉल्यूशंस थी वो हमने किया, फिर यूएन की क्या चीज़ें लिंक्ड है. मतलब इन अ वन आर्टिकल टॉक्स अबाउट मेनी थिंग्स, बट यू शुड नो अबाउट द निटिग्रिटी ऑफ द सब्जेक्ट फर्स्ट, राइट. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरी न्यूज़पेपर एनालिसिस कि आपको एक बेसिक पॉइंट जो आपका विच इज़ अ फाउंडेशन वो आपको स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, विच इज़ कॉल्ड स्टैटिक सब्जेक्ट्स. तो 15th फाइनेंस कमीशन जो है उन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया था सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स ऑफ डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग, और उसमें जो गवर्नमेंट की एलोकेशन है वो ऑलमोस्ट $28.6 बिलियन की है, राइट. सो डिजास्टर रिस्क दैट मस्ट बी इंटीग्रेटेड एट ऑल लेवल्स, लाइक हाउ वी बिल्ड, हाउ वी इन्वेस्ट and how we live. And one of the I think most effective risk reduction method is early warning system, and that was spearheaded by the UN. And early warning system से क्या होता है कि आप वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें आप कह सकते हो कि उस प्लेस से आप चले जाएं, सो दैट कि हमारी डेथ होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. Now housewives makes up over 50% of India's female suicide. अभी यहाँ पे इस आर्टिकल में आप देखो तो वो डेटा की बात हो रही है. इसमें बात हो रही है कि अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ मैरिड वुमेन स्पेशली अमंग पुअर हाउस होल्ड फेस एब्यूज, कंट्रोल एंड लिमिटेड फ्रीडम फ्रॉम स्पाउसेस. इसमें अगर आप देखें तो 2021 to 2020 में बहुत सारे केसेस में यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे बात हो रही है वुमेन एम्पावरमेंट की. सितंबर 10th मार्क्ड द ऑब्जर्वेंस ऑफ वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे. सितंबर 10th को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड्स suicide prevention day. इसमें in India if we talk about, the day calls for attention once again for the frequently overlooked problems of suicide among housewives. So अगर हम बात करें यहाँ पे, ever since India began categorizing suicide data by occupation, housewives have constantly ranked among the top 2 groups. So यहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई है जो सुसाइडल केस हैं. यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा दैट विच हाईलाइट्स द चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस फेस्ड बाय मैरिड वुमेन इंक्लूडिंग लिमिटेड मोबिलिटी, रिस्ट्रिक्टेड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एंड मैरिटल कंट्रोल, एज वेल एज फिजिकल, सेक्सुअल एंड इमोशनल अब्यूज इन द हैंड्स ऑफ देयर स्पाउसेस. It also shows that many women seldom seek external assistance and endure to attack on their freedom of silence. देखो हमारे इंडिया की जो सोसाइटी है which is something different, जहाँ पे आपका मेल पर्सन वर्क कर रहा होता है, फीमेल को उसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, तो इसमें जो हाउस होल्ड वर्क्स में ज़्यादा करने पड़ते हैं, ठीक है. बाहर जाने की उसको लिबर्टी इतनी जाती, फिर टॉक अबाउट द रूरल एरियाज़, उसके वजह से सुसाइडल केस हमारे इंडिया में ज़्यादा है, राइट. जो कि हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा भी इस चीज़ को रिवील करता है. And here is a summits conclude Modi calls for virtual review meeting November. यहाँ पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की बात हो रही है, एंड इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. जो हमारा अफ्रीकन यूनियन मेंबरशिप है दैट अमंग्स हाई पॉइंट्स ऑफ द इवेंट, एंड PM हैंडेड ओवर द सेरेमोनियल ग्रेवल टू द प्रेसिडेंट ल्यूइस इनसालियो, दैट इज़ द ब्राज़ील. सो ब्राज़ील जो है नेक्स्ट ईयर आपकी G20 की प्रेसिडेंसी होगी उनके पास, ठीक है. जैसे सिमिलरली हमारे
Sorry. इसमें ये चीज़ें बात हुई है. Now moving to the next article. Now it is talking about questions of the day. So here we discuss the very first question. Consider the correct statement regarding the Election Commission of India. तो you guys need to find it out कि आपको इसमें correct answer कौन सा है. So obvious इसका right answer है option B. Election Commission of India is an autonomous constitutional authority responsible for administering union and state selection process in India, and the body administers elections to the Lok Sabha, Rajya Sabha, state legislative assemblies in India, and office of president and vice president in the country, which is mentioned in Article 324. It is not concerned with the elections to panchayat and municipality of the state, क्योंकि वो state election commission का काम होता है. Election Commission shall consist of election commissioner and such members of election commissioner, if any, as the president may from time to time fix. Presently, it consists of chief election commissioner and 2 election commissioner. And Constitution has not prescribed the qualification, whether it is legally, educational, administrative, or judicial, of the members of election commission. And even though Constitution has not specified the term of members of election commission. विवाद से विश्वास, sometimes in the news that is related to what? Here are 4 options and it was for the direct tax dispute resolution. NBFC होती नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. So विवाद से विश्वास 2.0 scheme has been launched by Department of Expenditure, which comes in the Ministry of Finance. So the main aim is to resolve contractual disputes. Unified payment interface that has been developed by the Reserve Bank of India, National Information and Informatics Center, National Payment Corporation of India, and Niti Aayog, which is National Institution for Transforming India. So the right answer would be here NPCI. Consider the correct statement. And obvious इसका आंसर जो है आपका A ऑप्शन है. First successful human landing on moon that was on the near side in the Sea of Tranquility, Neil Armstrong and Buzz Aldrin landed their lunar module on July 28th, 1969, and they spent about 2.25 hours exploring the lunar surface before returning to the command module Columbia. The near side of the moon is the side that always faces the earth. It is more heavily cratered than the far side. The far side of the moon is side that never faces the earth. And here it is the last questions. Which of the following statements about the moon is true? The moon has its own light source. The moon's gravity is approximately the same as that of earth. The moon's surface is completely smooth and featureless, and astronauts have visited the moon multiple times. The first thing, moon has not its own light source. The sun is the main source. A option can be eliminated. Now the moon's gravity is approximately the same. No, the moon's gravity is 1/6 times. It means somebody weight is around 60 kg on earth, so the 10 kg that would be on the moon. Moon surface not completely smooth and featureless, so there's mountain, craters and valley is there, and astronauts have visited the moon multiple times, almost 12 times. So the correct answer is correct statement D. Astronauts have visited the moon multiple times. The first successful human landing on moon that was in the year 1969, and there have been total of 12 people who have worked on the moon. And the other statements are not true. As I told you, the moon does not have its own light source. It reflects sunlight, which is why we can see it in the night sky. And the moon gravity, which I told you, 1/6 of the earth, and moon surface not completely smooth and featureless, mountains and valleys. So this is all about the session, dear student, and I hope you enjoyed the session a lot. If you have any questions regarding the session, please let me know in the comment section, and make sure
that you need to subscribe our YouTube channel, so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. And if you have any question regarding this, please let me know in the comment section, and I hope you enjoyed the session a lot. Please share this video and the lecture to your friends so that they will get advantage of this. And if you have any questions, please हमें जरूर बताएं comment section में. I hope you enjoyed the session. We'll meet you in the next YouTube session. Till then, take care and bye bye.